Lost media, a form of content which existed before but it doesn't anymore. Any form of content can be a lost media and इसकी scary बात क्या है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, no matter how good of a researcher you are, you will just hit a point where you cannot find any new information on that lost media anymore. It's like you have hit a point and you don't know what to do anymore. Almost a year ago when I made a video on Mon Cheri CoCo, मैंने इस anime के बारे में इतना नहीं सोचा था. Mon Cheri CoCo, which is an lost Shojo romance anime written by Waki Yamato and directed by Kozu Masanobu. I didn't had a slightest idea कि हमें क्या मिलने वाला है. Mon Cheri CoCo was aired on TBS in 1972. TBS is one of the most famous broadcasting companies in Japan. Mon Cheri CoCo is a very unique lost media piece in itself. तुम्हें इस anime के opening audio, video, enhanced audio और video मिल जाएंगे जो कि YouTube और public websites, public portals पे available हैं. अब इतने सारे information और sources से ये तो हमें पता चल जाता है कि this anime really exists waiting to be found. 優しいのに冷たくないのになぜか悲しくなる जो तुमने अभी सुना ये था मोन शेरी कोको की एक OST का एंडिंग थीम. जब मैंने पिछले ईयर मोन शेरी कोको के ऊपर वीडियो बनाई थी, दिस एंडिंग वाज नोवेयर टू बी फाउंड. बट व्हेन आई वाज सर्फिंग अराउंड द इंटरनेट, तब मैंने देखा हार्ली टॉमस नाम के एक चैनल ने इसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड सरप्राइज्ड कि मुझे इतने टाइम से कुछ लीड्स नहीं मिले एंड दिस गाय आउट ऑफ नोवेयर एक एंडिंग थीम अपलोड कर देता है इस एनिमे की. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा था ह्यूज थैंक्स टू डॉट किरीसू फॉर फाइंडिंग दिस ट्रैक. आई जस्ट हैड टू फॉलो द ट्रेल्स और मैंने इस पर्सन को हर सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू कर दिया. आई जस्ट हैड दिस फीलिंग कि जैसा ये पर्सन क्लेम कर रहा है, इफ ही रियली डिड फाउंड दिस देन ही मस्ट हैव स्टम्बल्ड अपॉन मेनी अदर थिंग्स दैट आई कुडंट रीच. इस एंडिंग थीम का नाम रखा है ट्रू हार्ट, हार्ली ने अपने YouTube के टाइटल पे. अब इससे इतना तो पता चल गया था कि इस एनिमे में दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड हैं और दूसरे लोग भी रिसर्च कर रहे हैं इस एनिमे पर. अभी के लिए मेरी यही प्रायोरिटी थी कि मैं ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लोगों को ढूंढूं जो कि ऑलरेडी इस एनिमे पे रिसर्च कर रहे हैं. नॉनदलेस आई कॉन्टेक्टेड माई फ्रेंड्स जो कि अभी साके शनोबाशी गो फॉर ए पंच पे रिसर्च कर रहे हैं एंड आफ्टर सम आवर्स दे फाउंड ए डिस्कॉर्ड सर्वर जहां पे डॉट अवेलेबल था. द सेम पर्सन जिन्होंने ये एंडिंग थीम को ढूंढा है. मैं जैसे ही सर्वर ज्वाइन करता हूं, आई गेट टू सी मेनी चैनल्स रिलेटेड टू मोन शेरी कोको एंड इट्स सर्च. मैं जैसे ही एक एक चैनल खोलते जाता हूं, मुझे उतनी ही मेहनत डिस्प्ले होते जाती है. आई फाउंड मेनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मोन शेरी कोको जो कि शायद मैंने कभी सुना या देखा भी नहीं है. आफ्टर सीइंग ऑल दिस, आफ्टर सीइंग द डिटर्मिनेशन दिस शोड फॉर दिस एनिमे, इट वाज रियली समथिंग टू look at because they invested so much time in it. The two representatives of the search group showed their effort to participate in this video and share their research and theories about Mon Cheri CoCo. Hey, thanks for having me here. So, I'm the one who created the Discord server, the Mon Cherie CoCo search, just as a way to sort of archive all information that's out there, because surprisingly there's actually a lot about this show that's just sitting around remaining unarchived. As others have said, it's mostly due to language barriers since almost all of it is in Japanese, so unless you're looking it up under Japanese, then you're not going to find a lot. It's also a shame how the Lost Media wiki page for it doesn't have that much on there. Many people in the Discord server have managed to dig up a lot of useful and interesting information, which, by the way, big shout out to Duck Bunny on there. They found so much about this show, and they've helped out a lot in this search. So I kind of just want to talk about some of the more interesting and fascinating facts that we've been able to find about the show, and that's what I'll be talking about here. So the voice actress for Coco is Akemi Hirokawa, and she's also known for voicing Pee-Pee in Triton of the Sea. And actually, crazy enough, she's also the mother of the very well-renowned Bimani and Dance Dance Revolution composer Sota Fujimori, which is just very crazy and interesting to find out when I looked that up.
Also, I managed to find the song True Heart by Mayuko Nakajima, who's the same composer for the opening theme that's available, it's on YouTube. And it's believed that that's the ending theme for Coco, since it was included on side B of the Coco vinyl. I actually found that uploaded on Tumblr by user Bunny Maho. But sadly, we still don't have any footage of the ending, and we only have the song. But hey, that's still an incredible find. I was really happy to find that. Now, in terms of production staff information, two of the most prominent ones I should mention would be Kozo Masanobe, who's credited as chief director. He's well known for being a key animator for various Osamu Tezuka animations, such as Astro Boy and Marvelous Melmo. And also there's Yoshiyuki Tomino, who's the creator of Gundam and probably the most famous one. And he was a storyboard artist for episodes 3 to 4, 11, and 13. And that's according to info on Anime News Network. By going through various articles, it suggested that Coco's first episode aired on TBS television or Tokyo Broadcasting System, and by going through blogs by people who saw Coco, we managed to get a general idea of how the first two episodes were like. The first two, which were titled Cute Girl and Coco's Cake, were about Coco meeting a baker at a cake shop who's having problems selling his cakes due to how unappealing they look. Coco tastes them and is amazed at how delicious they taste, so she decides to help him decorate the cakes to make them look more presentable. The cakes sold very well after she designed them, and which establishes her talent as a designer that she's aiming to become. Now, it's been speculated that these episodes were made in part due to the sponsorship of Fujiya, which is like a candy and sweets company in Japan, and they're credited with sponsoring the show at the time. The TV station Kids Station, which was previously known as Lemon Channel, is the station that's suspected to have re-aired Coco in the 90s. They had a programming block called Nostalgic Anime Theater that aired anime from the 70s. It's unknown which year Coco could have aired on there. However, the station was launched in April of 1991, which narrows the options from then onwards. Despite this being listed on the Japanese Wikipedia for the show, there's no citation listed for this fact on the page. If you check out the page for yourself, you'll see that fact is lacking a citation. But personally, I'm still prone to believe it did air there, since the Twitter user Ruchi Shogun, the only person who's known to own VHS copies of the show, did say in his tweet that he recorded it from Kids Station. I just thought I should mention that it's lacking a citation on the Wikipedia page, since I found that pretty interesting. Also, there's some compilation bumpers for Kids Station / Lemon Channel on YouTube, but as far as I know, none of that include Coco have been discovered. Maybe it's possible Kids Station has some archives for the show, if it really did air there. I find it so hard to believe they would have lost or destroyed them. I pray that's not what happened to them, though. Well, I guess that's all I really wanted to talk about. Thank you so much for having me on here again to talk about this show and to get more information about it out there. It truly means a lot, and I hope people will find this interesting. Thank you so much. See ya. एंड आई रियली थिंक कि अब हम जितना क्लोज हैं मोन शेरी कोको को फाइंड करने के लिए, या अगर क्लोज नहीं भी हैं, वी हैव इनफ मटेरियल्स टू लुक एट. प्रीवियसली हमारे पास कुछ मांगा पिक्चर्स, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कुछ एनिमे सेल्स एंड ओपनिंग वीडियो एंड ऑडियो थी. लेकिन अब हमारे पास ओपनिंग एंड एंडिंग थीम है मोन शेरी कोको की, कई सारे सेल पिक्चर्स हैं, मर्चेंडाइज इंफॉर्मेशन, एयरिंग इंफॉर्मेशन एंड मेनी अदर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स अबाउट मोन शेरी कोको आर अवेलेबल टू अस नाउ. अब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिला है जो कि एक जापानीज पर्सन ने लिखा है 2005 में, जहां पे वो डिस्कस कर रहे हैं मोन शेरी कोको की पहली 2 एपिसोड के बारे में. इट्स मोर ऑफ ए रिव्यू थिंग जो कि इसने किया है. अब इस वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट इन्फो भी अवेलेबल है. इस पे कॉन्टैक्ट करने पर कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता. अब इस ब्लॉग में इसने मेंशन किया है मोन शेरी कोको इज एन शोजो मांगा बेस्ड ऑन वाकी यामातो एंड I think it was serialized in Shojo Friend, but it was animated in 1972. All 12 episodes just one cool. Each person has what he or she is good at. Coco, who aims to become a designer, meets a stubborn father of a cake shop who has good taste but cannot sell at all. In the first episode, Cute Girl, when Coco eats the cake, it tastes very good, but it doesn't look good at all. So Coco says, my uncle's cake is very tasty, but it doesn't look good. Let me design the cake
and I'll sell it twice or thrice times as much as it is now. Oh, I am a child who says something interesting, it's double or triple, he answers with a smirk. The old man at the cake shop was confident in his cake, but there must have been a considerable complex in not being to sell it. And in the second episode, Coco's cake, Yashan thanks to the cake designed by Coco. The cake soared like a fly and the store was very prosperous. It's a dreamy story, but I cannot find such a dreamy anime right now. In the final episode, Coco travels to Paris to make her dreams come true, but in a short story, an excellent song that will never be forgotten even after years. Lyrics by Meiko Arima, composition by Makoto Kawaguchi, song by Mayumi Nakajima. When my wet cheeks are dry, the morning comes to the window of a small room. Love is still in the haze, so it's fun. Mon Cheri Coco, who spreads his wings and asks for happiness. Blog यहीं पे खत्म हो जाता है with a beautiful line. There are many other websites जहाँ पे ऐसे blog post किए गए हैं. Some are faked, some are legit, and some are even older than this. अभी अगर हम आ जाएं merchandise information पे, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मोन शेरी कोको की जो टारगेट ऑडियंस थी वो अराउंड स्कूल स्टूडेंट्स पे ज्यादा थी. मर्चेंडाइजेस में हमें स्केचेस, पेंसिल बॉक्सेस, रेजर्स, कलर्स एंड कई सारी ऐसी स्टेशनरी चीजें देखने को मिल सकती हैं. एंड व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ आर द मॉडल शीट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑल्दो द पर्सन हु लिस्टेड दीज सेड दे आर फ्रॉम 1973, a year after the show aired, so they are mostly unknown. पिछले वीडियो में हमने एक रुचि शोगुन नाम के इंसान को मेंशन किया था जिसके पास मोन शेरी कोको की जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो प्ले करते हुए उसने ट्विटर पे डाला था. एंड इनिशियली हमने इसको कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी, बट वी गॉट ब्लॉक्ड एज वी सेड. बट द थिंग इज वी आर नॉट द ओनली वन हु ट्राइड टू कांटेक्ट हिम. अभी जितने भी क्रिएटर्स ने, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जितने भी सर्च टीम ने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ही स्ट्रेट अप डिनाइड कि इसके पास कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है. नॉर दैट ही एक्सेप्टेड थिंग्स कि मोन शेरी कोको उसके पास है, बट ही इज नॉट विलिंग टू शेयर इट. मे बी उसको ये सारी फाइल्स शेयर नहीं करनी होंगी एंड दैट्स व्हाई ही इज इग्नोरिंग एवरीवन हु हैज क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोन शेरी कोको. एंड द सेकंड सिनेरियो इज कि कभी उसके पास ये टेप्स थे ही नहीं, ही जस्ट ब्लफ्ड अबाउट इट. एंड द लास्ट सिनेरियो कैन बी दैट ही डजंट हैव द फाइल्स एनीमोर. He watched it and he lost it somewhere. We also have the full information of cast and relevant notes. Now, this is a TV schedule on TBS Channel 6. According to this guide, at 7:30 they have Mon Cheri Coco, Kawaii Anoko, which translates to That Cute Girl, featuring Hirukawa Akemi and Mori Katsusuji. And also, let's translate some articles which are available to us right now. अब मैंने इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करने के लिए अपने कुछ जापानीज फ्रेंड्स की हेल्प ली थी. एंड सरप्राइजिंगली दिस न्यूज़पेपर्स आर रिटन इन ओल्ड कांजी. कई लोग तो इसे कर ही नहीं पाए ट्रांसलेट, बट वी फाउंड सम पीपल जो कि इसे अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करके हमें फॉरवर्ड करने में सक्सेसफुली रहे. सो दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्क्राइब्स द कैंसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एंड इट्स टीवी स्लॉट्स बीइंग रिप्लेस्ड विद मोन शेरी कोको. इट रीड्स ACBC TV documentary featuring the Japan men's volleyball team that will make an appearance at Munich Olympics that becomes known for being barely passing as amateurs was cancelled right before the Olympics on August 20th. In its place, manga Mon Cheri CoCo will air from 27th. To Munich sent a film crew to the Olympics from August 26th and planned to have climax featuring Japan-Soviet Union match. However, due to restrictions on the production, they had halt production and the story will end right as the Japan team leaves for the match against the Soviet Union. Mon Cheri CoCo is an anime based on a manga featuring in a weekly Shojo magazine. इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करते हुए हमें ये तो पता चलता है कि मोन शेरी कोको की रिलीज इतनी इजी नहीं हुई थी. और भी 2-3 आर्टिकल्स हैं जो कि अभी हमारे पास हैं, बट दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमे, बट दे हैव द इंट्रोडक्शन एंड द प्रमोशन फॉर द एनिमे. ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स को पढ़ते हुए हमें कई सारे हिडन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी जो कि अभी तक हमें नहीं पता थी उसे पता लगाने का एक मौका मिलता है. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी एक चीज मेंशन की थी कि वी हैव कॉन्टेक्टेड ए गाय हु क्लेम्स टू हैव द टेप्स ऑफ मोन शेरी कोको बट ही इज ओनली विलिंग टू सेल इट टू अस. एट फर्स्ट इतना अपीलिंग नहीं था वो बंदा, एंड जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे थे उसने वो एडिटेड नहीं लग रहे थे बिकॉज वो एडिटेड नहीं थे. वो स्क्रीनशॉट्स आए थे एनिमे फॉक्स ऐप से जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड वेबसाइट भी है इनकी. दे आर जस्ट कलेक्टिंग द एनिमे एंड जस्ट फॉर द शो केस दे मेड द लेआउट. बेसिकली whoever that guy was, he was trying to scam us, but okay. अब एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती
चलती है मोन शेरी कोको के बारे में. अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क फीचर्ड ऑन द वीकली शोजो फ्रेंड, दिस वाज ट्रू इन द वीकली मैगजीन एज वेल, बट कोको's father is a French head of a textile company and her mother is from Nishijin, Kyoto. Her mother has left Coco in the care of her father while she returns to her hometown in Japan. अब ये जो स्टोरी है ये पर्सपेक्टिव थी कोको की जो कि उसके मदर के ओर से दिख रही है. जैसे जैसे ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते जाते हैं और भी थोड़ी बहुत चीजें पता चलते जाती है एनिमे के बारे में. सो डिस्क्रिप्शन में जितने भी रिसर्च मटेरियल्स एंड ट्रांसलेशंस अवेलेबल हो जाएंगे. तुम इन सारी चीजों को बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे cause we are making it public now. और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है and I really have to say this कि ये इन्फॉर्मेशन ये रिसर्च पेपर्स हेल्प करेगी इस एनिमे को बाद में रिकवर करने के लिए. I am just sure about it and I would like to urge the audience to share this video. जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में इससे शेयर करें ताकि इस वीडियो से इस एनिमे की और ज्यादा इंगेजमेंट बढ़े. Mark my words, this lost media can be found, can be rediscovered. It is not impossible but it is a हार्ड जॉब एंड जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हेल्प होगा. एंड आई होप कि तुम लोग इस चीज़ में हेल्प करोगे. एंड एज यू कैन सी इस टाइप के वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिसर्च एंड एफर्ट्स लगते हैं. सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. और मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.